देश की दिग्गज डेटा एनालिटिक्स कंपनी में से एक 2006 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। कई फॉर्च्यून 500 कंपनियां ऐसी जो इनकी क्लाइंट्स हैं, इनके पार्टनर्स हैं, एडोब, उबर, 7-Eleven, ये सारे ब्रांड्स हैं जो आप अगर हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो आप इनको देखते हैं, जानते हैं, हिंदुस्तान में भी आप पहचानते हैं। तो ये सारे इनके कस्टमर्स रहे हैं। पहले आईपीओ की जानकारी दे दूं, और प्राइस बैंड है 190 से 197 रुपये। फ्रेश इशू 475 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 125 करोड़ का है। टोटल मिलाकर 600 करोड़, छोटा है। 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट का बनता है 3900 करोड़ का। ये है इशू की साइज। तो टोटल 600 करोड़, मार्केट के 4000 करोड़ के आसपास। हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो कंपनी के जो सीईओ हैं राजन सेतुरमन साहब, जो बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। वाह, IIM कलकत्ता से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी, गजब की दोनों कॉम्बिनेशन खतरनाक है, बिट्स पिलानी और IIM कलकत्ता। वेरी गुड। कंसल्टिंग स्पेस में 13 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है, और 2016 से कंपनी के साथ में चीफ पीपल ऑफिसर के तौर पर, और अभी जुलाई 2021 में आप सीईओ बने हैं। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं जो हैं CFO राजन वेंकटेशन साहब। ओहो सर, आप दोनों को सरनेम से बुलाना पड़ेगा, दोनों राजन हैं। तो आइए, तो ये मेरे लिए चैलेंज होगा। हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन की है कॉमर्स में, और साथ ही CA भी हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग का 14 साल से ज़्यादा का प्रोफेशनल अनुभव है। 2021 से ही आप भी कंपनी के साथ जुड़े हैं और कई बड़ी कंपनियों के साथ कामकाज कर चुके हैं। दोनों राजन सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मैं हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। मैं इंग्लिश में आपसे ट्रांसलेट करके पूछ लूँगा, और जब आपको जवाब देना है, मैं समझता हूँ कि थोड़ी हिंदी बोलने में आपके लिए मुश्किल है, आप कंफर्टेबली हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलें। जहाँ आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हों आप पूरी इंग्लिश भी बोल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। बी कंफर्टेबल, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बात करेगा। सबसे पहले CEO साहब, सेतुरमन साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आपकी कंपनी का रेवेन्यू कैसे आता है, क्या काम करने से आता है। पहले फर्स्ट एक्सप्लेन योर बिजनेस मॉडल सर। Sure. Yeah. No, thank you first for having us on the show today. We are what we call a pure play data analytics company. And within data analytics, we provide the full spectrum of services. So we typically start off with the analytics strategy and roadmap, where we help identify and define the analytics initiatives that an organization should be pursuing, given their business context, what are their most pressing problems and the opportunities. So that's a pretty interesting, important chunk of the business that we do, because that's what sets up the rest of the work, right? And about 15% of our work is of that nature. The bulk of the work we do is what we call business analysis and insight generation, so which is where we do both look back and look ahead analytics. Now, answering questions around what happened, why did it happen, what is going to happen, and what should you do about it, right? And here is also where we use all of the artificial intelligence and machine learning algorithms to predict the future, right? Could be demand forecasting, could be customer segmentation, right? Could be other initiatives around supply chain, for example. And all of this is typically presented back using interesting visualization and dashboards, so that the end business users and decision makers can actually understand all of this analysis and take the right kind of decision. So that's the bulk of the work that we do. There is also about 20% of the work that is more in the nature of data engineering, which is the part of the business where we help organizations pull data from disparate systems that they have. Could be their enterprise resource planning systems, could be their transaction processing system, could be external data from social media, for example, could be data from IoT sensors and devices that they have implemented in their manufacturing supply chain. We pull together all of that data into interesting data platforms, using which you can then do all of the analytics that I talked about earlier. So broadly, that's the spectrum of the business. We have also built assets and accelerators and solutions that help in terms of kickstarting engagements and generating a bit of non-linearity to our profile. A lot of the work that we do is at the front end of the value chain. About 60% of the work is in the nature of customer and marketing analytics, starting with customer segmentation, lifetime value, cross-sell, upsell opportunities, and then moving on to marketing return on investment, media mix optimization, and so on. The rest of the work will be across supply chain, finance and risk analytics, and also HR analytics. So broadly, that's the spectrum of work that we do. We mostly work with Fortune 500 companies
and we work with the functional heads, the CFO, the chief marketing officer, the chief supply chain officer. Mm-hmm. This is a significant difference, right, in comparison to what you typically see Mm-hmm. in the IT organization, because they largely work with the IT CIO, CTO organization. So that's Right. a big difference as well. We solve business problems using the power of data and analytics. ओके वंडरफुल इंटरेस्टिंग सो नए ज़माने का बिजनेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस जो आज के ज़माने में जितने लोग हैं ना इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको सबको पूछो पहली पसंद उनकी जो है ना इंजीनियरिंग में अगर कौन सी फील्ड आपको लेनी है डेटा एनालिटिक्स राइट सर सेतुरमन सर सब आजकल यही फील्ड में जाना चाहते हैं इंजीनियर्स There is a lot of interest, of course. I mean, data and analytics is a very hot and emerging topic. And in fact, I would say that the pandemic has further accelerated, right, the digital transformation initiatives of most organizations. So it's a very hot space at this time. नाइस अच्छा सीएफओ साहब जो है वेंकटेशन सर मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था पिछले 3 साल में इन लास्ट 3 इयर्स टॉप लाइन ऑलमोस्ट स्टेबल है बहुत बढ़ी नहीं है घटी भी नहीं है कम भी नहीं हुआ है ज़्यादा भी नहीं हुआ लेकिन आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं क्या रीज़न है सर और दूसरा ये कि ये सस्टेन करेंगे जो इतना बढ़िया प्रॉफिट और मार्जिन्स बढ़कर आ रहे हैं ये सस्टेनेबल है सर Good morning, Mr. Anil. Firstly, for having us on the show. Thank you. Yeah, to answer your question, the revenue outlook, growth over the last 3 years, like you rightly mentioned, has been a little flattish, but that's in FY21 that was on account of the pandemic that happened. Specifically in Q1 and Q2, if you see some of the newer business initiatives from our clients was a little sluggish. But Q3 and Q4 onwards, like Rajan mentioned, the pandemic has actually proved to be a great accelerator for the demand for our services. In fact, we witnessed a very, very strong bounce back. Those trends continue to pan out into Q1 and Q2 of the current fiscal as well. In terms of the profits itself, the reason why you see a significant uptick in the margin profile for our business is the conscious shift that we've actually managed to achieve over the last 3 years. Historically, if you look at our business, a significant portion of the work was delivered from on-site locations or from client locations, which in our case, the United States being the primary market for us, some of our resources or a significant chunk of our resources used to work out of the US, and so therefore the on-site mix of revenues was fairly high. But what we've managed to achieve in the last 3 years is we've managed to significantly shift that mix, whereby we managed to deliver a higher portion of the work from our centers of excellence, which are in Chennai and Bangalore. And therefore, we've been able to improve our margins significantly. You're right, FY21, if you look at our margin profile, had a substantial improvement, and the margins grew up to almost 34%. Right. But we believe, even if you look at the pre-pandemic margins that we had, we've always been a very, very profitable franchise. Our historical EBITDA margins have been in the range of 25 to 28%. We believe that those are fairly, comfortable and sustainable levels for us to achieve as a company. Perfect. Any supernormal profits or any profits that in excess of the 25 to 28% that we manage to generate will be reinvested back into the business to scale up the business. Absolutely. ओके सो सीईओ सर मिस्टर सेतुरामन सर जो अभी बता रहे थे आपके सीएफओ साहब भी दैट वॉट एवर यू अर्न सुपर प्रॉफिट स्पेशली यू री इन्वेस्ट लेकिन एक और चीज़ है इन योर IPO 150 करोड़ यू हैव रिजर्व फॉर इनऑर्गेनिक एक्सपांशन राइट सो व्हाट आर योर प्लान्स किस तरह का आप एक्विजिशन करने की सोच रहे हैं किस ज्योग्राफी में कहाँ किन कंट्रीज में आप एक्विजिशन करने की सोच रहे हैं Sure, yeah. The plan on the inorganic acquisitions and opportunities is to stay close to the current wheelhouse of work that we do, right? Both in terms of focus on geographies, which we are currently working in, as well as the industries that we currently serve. So US is our biggest geography, but we do have subsidiaries already in Europe, right? In UK, Germany, and Netherlands. And these 3 countries together account for about 70 out of the Fortune 500 companies. So there is a lot of potential in these markets. The US also is a fairly large market and growing market. And likewise, from an industry standpoint, technology, industrials, retail and consumer products, and finally, banking financial services. These are all the industries that we are focused on.
This space is pretty hot. The last 12 to 18 months have seen over 900 M&A transactions, and every week we keep getting opportunities of smart, young, nimble companies that are coming up with some very interesting ideas and solutions, right? And generating IP and sticky contracts. So we are in the process of evaluating them. The idea is to use the inorganic opportunities to create a step change for us, right, in these geographies and in the underpenetrated verticals and in the European geographies, right, that we are focused on. So the type of work that we will do will continue to be the same. We are not looking to deviate significantly from that, but we would be interested in companies that can bring some step change, right, in terms of access to clients, to markets, to interesting solutions, right, that we can take to these clients. Perfect. Thank you so much, sir, for taking your time out and speaking about your IPO and company to our viewers. बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये थे टॉप मैनेजमेंट लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के, जो बताते हैं अपनी कंपनी की योजनाओं के